I'm Dr. Satyen Himrajani. I'm a neonatologist and I have acquired post my graduation in pediatrics a specialty in neonatology, and I have worked in Gangaram Hospital as well as have worked abroad in Australia. Now, for the last 12 years, I'm settled in Jaipur. I'm working with Fortis Hospital and I run my own clinic also. Between 6 to 8, I sit at Adarsh Nagar, and that clinic is with the name of Neonatal Perinatal Consultation Clinic. I do see kids from beginning or even antenatally also. I see mothers who have their fetuses in problem, any sort of problems, and then I tend to give the solutions to that. And in our clinic, we are doing vaccinations, we are doing growth monitoring, development, special clinic for prematures is going on. So this is situated in Adarsh Nagar, and the timings are between 6 to 8. So now coming to the topic, and that topic is newborn, first week, what to expect. So I'm sure there are lots of couples who are going to have their first baby, and that's always one thing which makes them jittery as to how to be prepared, what can we expect in these babies. So trust me, it's fairly simple, and you just have to acquire the clues from your babies. Your baby has been giving you clues even while the baby was in womb, and then these signs will become much more clearer once the baby is in your hands. So newborns are the most, vulnerable, but most blessed uh, part of the human life as well. Unfortunately, while they're coming out from the mother's womb, there's a big transition that they have to go through, and this transition sometimes makes them vulnerable to problems. So, if we are prepared in our mind and we have a right mindset, then we'll be able to prevent a lot of these complications and give them a better quality. As a matter of fact, the neonatal part is the part where maximum problems can happen because we are not able to understand those clues. So, while a baby is born, we know that a baby is born crying, and that cry makes their lungs filled with air. This transition definitely is the most important transition that helps the baby come out and lead a viable and an independent life away from the mothers and away from being attached to the mother's cord. While in the womb, they are all dependent on everything, including the nutrition, the oxygen that they're getting, and the even the excretion or the uh, जो भी अपना इनका गंदगी होती है अपना वो भी निकालने के लिए the kidneys and all are not that much functioning, but after that, after they are born, all this has to depend on their own system. सो जनरली जो बेबी पूरे टाइम अपना क्रॉस करके निकलते हैं लाइक 39 वीक्स 40 वीक्स की एक प्रेगनेंसी मानी जाती है तो दोज बेबीज दैट आर born say around 37 weeks 3 weeks before their time of birth are good enough to lead a very good and independent life. Those that are born slightly premature are the ones that are more vulnerable and that they will require a lot of care even in the NICU. So if your baby is being born early, then you need to be in a hospital or in a setup where these sort of care can be taken up, and that can happen only in an NICU, right? For those who are born with a fully term baby जो 37 weeks पूरे क्रॉस कर चुके हैं almost 9 months क्रॉस हो चुके हैं उन babies के लिए first day is a very uneventful day. Generally, these babies are getting adjusted to the new environment. बाहर के environment से ये adjust हो रहे होते हैं अपना. Inside the mother, they are
सराउंडेड बाय अ लिक्विड पूल जो बिल्कुल इनको हॉट रखता है, वार्म रखता है। बाहर आकर के इनको अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन करना पड़ता है। तो वी नीड sort of help to provide to them so that these temperatures can be maintained. अब ठंड है, जैसे अभी की ठंड चल रही है, तो ऑब्वियसली दे विल नीड मोर क्लोथिंग देन अस। बट अगर हम उनको बहुत ज्यादा कपड़ों में लाद देते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इनमें टेम्परेचर कंट्रोल उतना अच्छा नहीं होता है, तो दे कैन इवन डेवलप फीवर बिकॉज ऑफ दैट। एंड विद दैट फीवर दे मे लूज लॉट ऑफ वाटर एंड बिकम डिहाइड्रेटेड। पानी की कमी भी इनमें आ सकती है इस फीवर की वजह से। तो कई बार फीवर इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ हमारी ओवर क्लोथिंग, हमारी ओवर हीटिंग जो हम करते हैं। और उसमें बच्चा कई बार आपको एक साइन देगा कि बच्चा विल बी क्राइंग अ लॉट। सो द जनरल रूल ऑफ थंब इज 1 layer of cloth extra, and their hands and their legs should be covered. Even their head should be covered specifically during the winter season with a cap, specifically when they are going out, या आपके अगर रूम में कोई विंडो वगैरह खुली है जिससे विंड के करंट्स आते हैं। These wind currents should be stopped, otherwise they can make the baby cold very early. The way to check whether the temperature is fine or not is with the back of your hands. आप बेबीज के अपने हैंड को आप टच कर सकते हो and their tummy or chest. If you find a difference, if you find that the hands and इसके जो सोल हैं they are cold, then that means that this baby is not maintaining the right temperature और इसको और extra clothing या जिसे हम कहते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, बेबी को लेकर के आप सिर्फ स्किन पे अपने चेस्ट पे लेकर के रख लीजिए एंड कवरिंग देयर हेड, कवरिंग देयर हैंड्स, कवरिंग देयर नीचे वाले फीट। उसके बाद एक चारों तरफ कोई भी एक गर्म कपड़े से उनको ढक देंगे तो बेबीज विल बी गेटिंग द हीट डायरेक्टली फ्रॉम योर बॉडी एंड दैट विल बी अ गुड। Now, most of the babies in the first day are sleeping for a very long time, sometimes even 20 hours or more than that, and they'll hardly wake up to take feeds. Most of the time, the mothers are worried what is happening, my baby is not taking feeds. That is because the requirement is very less. Because they sleep, इनकी इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम होती है। Their stomach is almost the size of a small spoon, 5 ml to 10 ml spoon. उस साइज का होता है इनका स्टमक। तो what they acquire is just around 5 to 10 ml of feeds at times. If you give more, the stomach will stretch, and sometimes if you pour more, ज्यादा अपना जोर से अपना उसको फीड कराने की कोशिश करोगे, डालते जाओगे, तो बच्चा जो है वॉमिट भी कर देता है। Their vomit control mechanism is also poor. तो इससे जितना बच्चे की मर्जी है, जब बच्चे की मर्जी है, that is on demand feeding should be practiced. And roughly जो बच्चे अच्छे वेट के हैं 10 to 15 ml on the first day is good enough to make them feed and feel satisfied. Generally 2 to 3 hours feeding is what is recommended, but sometimes in the beginning they may sleep for 4 hours also और उससे भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, except if they are born to diabetic mothers या बहुत small हैं वेट में या premature हैं, तब उनको थोड़ा सा टाइम फीडिंग देना पड़ता है। Now, first day is also very important because they have come to an alien environment जहाँ पे और infections है, तो इन infection से prevent करना is also our responsibility. As doctors, we do vaccinate them within the first 24 hours, and most important is giving them BCG, OPV, and hepatitis B. ये जो vaccines होते हैं ये tuberculosis, polio, and एक hepatitis B जो jaundice करता है, जो liver cancer करता है, उनसे prevent करते हैं। So ask your doctor about these vaccinations once the baby is born and they'll be happy. Another form of infection prevention is giving them breastfeeding. So first milk is colostrum, and that is very rich in all the immunizations that we will be giving. तो उनका एक antibodies उसमें जो अपना cells होते हैं which give them इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत, इम्यूनिटी देता है, लॉन्ग टाइम जो लास्ट कर सकती है, वो ये प्रोवाइड करता है कोलोस्ट्रम।
So always and always, even if you've got a cesarean, आप lying down position में भी अपने बेबी को अपना फीड कराने की कोशिश कर सकते हैं ना. And that is a golden way to give your baby the best start to acquire the best health. So do that. So even if you're not able to breastfeed for any reason, do skin to skin contact. That is paramount. ठीक है. कुछ ऐसे इन्फेक्शंस जिसकी वजह से आप उनको मिल भी नहीं सकते हो, दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी वो जिसमें आपको हेल्थ प्रोफेशनल के हिसाब से ही अपने जो वो अपनी एडवाइस देते हैं वो फॉलो करनी चाहिए. Now first day is also when they lose a lot of weight because they are born with lot extra water. और अभी इनका जो बाहर का सिस्टम था जिसमें वाटर वगैरह ही भरा होता है वो इवेपोरेशन होता है वाटर वगैरह. सो लॉट मेनी रीजंस व्हाई दे लूज वेट, बट वी हैव टू गिव देम एडिक्वेट फीड्स. डेफिनेटली अगर आप कहीं पे भी ऐसे हॉस्पिटल सेटअप में हैं तो कोशिश कीजिए कि सेकेंड डे को आपको वेट पता चल सके. सो फर्स्ट डे यूजुअली इज वेरी क्वाइट. अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है लाइक द बेबी इज नॉट फीडिंग एट ऑल या उसको सांस में कोई दिक्कत लग रही है जिसमें हर सांस के साथ कोई आवाज आ रही है या बेबी को फर्स्ट 24 आवर्स में ही जॉन्डिस आता हुआ लग रहा है एंड गॉड फॉरबिड इफ यू आर नॉट इन द हॉस्पिटल सेटअप देन यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट योर हेल्थ एडवाइजर और द फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन. सेकेंड टू फोर्थ डे जो होता है बेबी का दैट इज अ कोर्स ऑफ स्टेबलाइजेशन जिसमें अगेन फर्दर वेट लॉस हैपेंस बट वो इतना नहीं होता है ड्रामेटिक जितना फर्स्ट डे पे होता है. So babies can lose up to 10% of their baby weight. So they can be born with a weight of 3 kilos but up to fifth day generally वो अपना 300 grams तक भी weight lose कर सकते हैं. That's just an example. So your baby may not be really bad if the baby is losing weight. Now these babies are born जब अंदर womb में होते हैं तो they are not exposed to sun or so they don't have a timing जैसे हमारा होता है कि डे टाइम में सोना है डे टाइम में वर्क करना है नाइट टाइम में अपना. So they have a different sort of a sleep cycle, and as I said कि they can sleep for 18 to 24 hours but sometimes their sleep is more during the day in some babies and they'll be more awake during the night. Now, once they're awake, they'll want to be with the mother. They'll want some sort of activity कि हमारे को कोई गोद में ले, कोई बात करे. So all these things can happen during that period, and that is why you need to be taking sleep and naps along with your baby, specifically for the mothers, first-time mothers, and try and be awake with your baby during the night time. Trust me, this takes a long time to settle down. कई बच्चों में 6 months, कई बच्चों में 9 months, and we cannot change this cycle. We cannot give any medicines for that to change this cycle. Even if you're working, you have to adjust in a way कि आप उसकी night times की जो उसकी cravings हैं, you can give them. Many babies are born जब night time में ही they take lot many times feeding, even half an hour में भी feeding ले लेते हैं. So that is sometimes what we call as cluster feeding, and that is also a normal amount, normal type of behavior. इसमें अपने को worry नहीं करना है अपने को. We have to fill the demands, only then they'll grow, and then gradually these things will settle down. These babies are born with a slightly different type of skin जो बहुत ही पतली होती है, and it is not exposed to external environment. So many a times their skin will develop rashes. These rashes will be red बिल्कुल जैसे मॉस्किटो ने बाइट कर दिया है अपना, and they'll appear at different parts, chest, face, everywhere. But again, this is a normal phenomenon. We don't need to do any treatment for this. For their skin, what needs to be done is only coconut oil application. That's one of the best form of oil that is available. जो अपना उसके लिए apply करें. Try and do sponging in the initial part. एक skin का ही part होता है cord which is attached to the mother. And that cord, generally, we ask the mothers to make it dry, let it fall on its own, let it not be wet. Even जब हम diaper भी बांधते हैं, तो these diapers also need to be wrapped in such a way कि ये cord जो है ये बाहर निकली हुई हो, diaper के अंदर नहीं.
So these sort of ways will make the cord dry and prevent it from infection. जब ये dry हो रही होती है तो this is more predisposed to infection. And if there are any signs of infection जैसे redness बनने लग गई है, इस cord में से बहुत गंदा सा discharge आ रहा है, smelly सा discharge आ रहा है, yellowish सा discharge आ रहा है, greenish सा discharge आ रहा है, तो you can show to your doctor and they can advise whether any treatment is required or not. This can also be very dangerous cord infections, so prevent from it. Okay, even haldi lagana वगैरह is also not a good practice. First day, many parents have this habit of giving honey as good tea. Yeah, other forms. So this should not be practiced. Only and only milk should be given, and best form is breast milk. सम बेबीज जो पूरे टाइम गुजरे होते हैं इनकी स्किन थोड़ी सी रफ एंड ड्राई टाइप होती है. देयर आर मेनी टाइम्स सम क्रैक्स दैट मे डेवलप ऑन देयर स्किन स्पेसिफिकली एट द जॉइंट्स लाइक एंकल की जॉइंट पे होता है, फुट पे होता है और वहां पे थोड़ा सा ब्लड भी आपको दिखेगा. बट अगेन दिस इज अ नॉर्मल फिनोमेना. इफ यू अप्लाई गुड अमाउंट ऑफ ऑयल तो देन यूजुअली जनरली इसके बाद जो है अपना कम हो जाता है. Last is 5 to 7 days. So usually by this time you'll be discharged, and 5 to 7 days when the baby is more active, taking more regular feeds, and then they start gaining weight or losing less weight also. But this is the time when you have to go back to your pediatrician if you've been discharged to get a review whether a jaundice has reappeared, whether a weight loss is very significant. Also, I will advise that there are many important tests that are to be done जो एक health physician या pediatrician देख करके आपके बेबी में नहीं diagnose कर सकता. So one is importantly the eye test. आई टेस्ट से हम लेंस वगैरह उसके सही बने हुए हैं, कोई मोतियाबिंद नहीं है, वो सब देख सकते हैं. So that gives us a primary clue whether the eyes are correctly formed. Second is the hearing screening test. This is very important. 1 in 1,000 babies में hearing deficit हो सकता है अपना without any family history. So one should get this test done. And the third test is a screening test for blood. Blood disorders में भी thyroid की problems होती हैं. अपनी mothers को भी आप देखते होंगे कि mothers को हर pregnancy में thyroid का test कराया जाता है. So why not for babies also these tests should be done. Similarly, there are other problems which can be easily tackled, easily prevented and easily managed by first diagnosis. So within the first week, if you've not got these tests done, you can ask your doctor to get a newborn screening test, which is called as a metabolic screening test for your babies. And that gives them the best start to their health. हमें problems identify करके this gives them a very sound fundamental uh, नींव जिसे हम कहते हैं strong नींव to have a very healthy future in life. Thank you. I'll be happy to answer any questions from the audience. So I think I have one question from Ananya. After how much time I will give home food to my kid? So this home food preparation is what we call as complementary feeding, and usually this starts at around 6 months. So if your baby is on milk, exclusive milk or breast milk, better continue that exclusively for 6 months. Second is Mrs. Kanika Bhatt. She is asking, Sir, मेरे बेबी का hips पे red patch सा हो गया है. Is it diaper rash or infection? Now diapers की वजह से definitely this कनिका जी ने बहुत एक important question उठाया है. अगर ये आपका जो डायपर रैश है तो ये आपके बिल्कुल पॉटी के एरिया में होगा. अगर ये डिफरेंट एरिया से है, अपना पॉटी के एरिया से डिफरेंट है, तो दिस कुड बी एन इन्फेक्शन. So we cannot diagnose it based on your question, कनिका जी. आपके इसके लिए जो है pediatrician को एटलीस्ट आपको दिखाना पड़ेगा. टेलीकंसल्ट इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर विच यू कैन कंसल्ट. बट डायपर रैशेज आर वेरी कॉमन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि डायपर्स को बहुत टाइटली अगर अपन ने रैप कर दिया है, बहुत देर तक अपन ने रैप किया हुआ है, या अगर हम उसके स्टूल को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं and we keep the baby in diaper for very long hours, say more than 12 hours, 8 hours,
then this is likely to develop diaper rash. So good quality diapers which are frequently changed every 4 to 6 hourly, ठीक है, even if they have not passed any stool, या जब वो पूरा यूरिन कर देते हैं, they give an indicator that there is a yellow line which changes to green line, तो वो अपना indicator अगर पूरा green हो गया है, which means that the diaper is completely full, then you need to change it. So Kanika ji, you need to show it to your pediatrician. किरण जी is asking, my son is 2 years old. वो जब रोता है तो उसकी नाभि स्वेल हो जाती है. किरण जी, this could be umbilical hernia. ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कई बेबीज में, और इसके लिए जो है आपको चिंता करने की बात नहीं है. आई होप ये अगर ये शुरू से ही थी प्रॉब्लम तो आई एम होपिंग कि ये धीरे 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 कम हो रही होगी. 90-95% बेबीज में ये 2 years तक खत्म हो जाती है. अगर नहीं हुई है और उसको कोई और प्रॉब्लम है, तब आपको अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना पड़ेगा. ये और भी प्रॉब्लम्स का इंडिकेटर हो सकता है. Akansha ji is asking, which baby food is good for 6 months baby? So Akansha ji, this is a time of change for your baby, जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी होती है, जिसे हमने बात करी. एंड आपके लिए जो फूड है, होम मेड फूड इज द बेस्ट. वट एवर यू आर ईटिंग, दैट सेम फूड शुड बी. देयर इज नो रोल ऑफ एनी फैंसी फूड विच इज प्री प्रिपेयर्ड, जो है सिर्फ पानी में डालो और उसमें बन जाए. दैट सॉर्ट ऑफ फूड्स विल मेक योर बेबी अनहेल्दी फॉर फ्यूचर. सो गिव देम गुड फूड विच यू कुक्ड, फ्रेशली कुक्ड, और अच्छे से कुक करके आपने उसको किया. तो उसमें आप, इफ यू आर मोर इनटू wheat and all, तब भी wheat हम शुरू में प्रेफर नहीं करते हैं, बट टू स्टार्ट विथ राइस, सूजी, उसकी खीर बना करके दे सकते हैं. बनाना is a good fruit to begin with, but most of your emphasis has to be on cereals. So I think that's probably the end. No more questions. So I'll end, and you can follow me on Baby Chakra for upcoming articles. We'll keep on posting some articles and live chat as well. Okay, thank you.